So we have developed the T model. So T model आपके पास इस तरह का आ रहा है. ये विदाउट अर्ली इफेक्ट हमने शो किया हुआ है. अगर अर्ली इफेक्ट को हमने कॉमन रेट करना है तो वी जस्ट हैव टू प्लेस अ रजिस्टर स्मॉल आर नॉट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल्स. तो अर्ली इफेक्ट यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा. अब यहाँ पर नोट कीजिए कि इस केस में it is possible to have a current controlled current source variation of this T model. So ये T model की voltage controlled current source variation है, and if we like to obtain current controlled current source variation for this T model, all we have to do is determine this current through this resistor and take this as the primary parameter and express the value of the dependent source in terms of this current. So ये current यहाँ पर अगर आप ohms law लगाएं तो this current I is equal to the voltage VGS whole divided by the resistor which is 1 over Gm. So this is Gm VGS. So हमने इस value of current को इस करंट के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना है. तो वन कैन सी दैट कि ये वैल्यू ऑफ करंट इज जस्ट आई. अगर आप आई को एज प्राइमरी पैरामीटर लेते हैं तो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स वेरिएशन ऑफ टी मॉडल इज पॉसिबल एंड इट कैन बी ड्रॉन एज दिस इज आई एंड दिस इज ऑल्सो द करंट आई. सो दिस इज द करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स वेरिएशन फॉर द टी मॉडल. तो इस केस में आपने करंट को एज अ प्राइमरी पैरामीटर ले लिया और वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट करंट. सो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास यहाँ पर भी वैल्यू आई आ गई और यहाँ पर भी आपके पास इसका करंट इज आई. सो दिस इज अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स वेरिएशन ऑफ द टी मॉडल. सो पाई मॉडल के केस में करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल. टी मॉडल के केस में करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स वेरिएशन इज पॉसिबल. So as a summary, this is what we have. आपके पास MOSFET के केस में there are only two small signal model parameters. GM is equal to Kn times VOV and is also equal to ID divided by half VOV. Kn आपको पता है is the MOSFET transconductance parameter which is given as Kn prime W by L and Kn prime is mu n times C oxide. R naught is VA divided by ID और इसका VA मैग्नीट्यूड कर लेते हैं ताकि PMOS के लिए भी ये वैलिड रहे. सिमिलरली GM को PMOS के लिए भी सेम आप लिख सकते हैं. Kn की जगह जस्ट आप Kp लिख देंगे एंड यू विल गेट एक्सप्रेशन फॉर PMOS ट्रांजिस्टर. पाई मॉडल की जस्ट एक ही वेरिएशन पॉसिबल है विच इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स वेरिएशन. टी मॉडल के लिए दोनों तरह की वेरिएशंस पॉसिबल हैं. यू कैन ईदर हैव voltage controlled current source variation where the primary parameter is a voltage VGS, or you can have a current controlled current source variation where the primary parameter is a current I. So let's apply these ideas to this problem. Example 5.11. हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि we have a MOSFET which we can see is an NMOS transistor or N-channel MOSFET. Biasing is done by using a constant current source I. So इस current source के मदद से हमने biasing की है. Assume that the values of I and RD are such that MOSFET operates in saturation region. तो यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि आपने ये determine नहीं करना बल्कि ये given है कि saturation region में ही MOSFET operate कर रहा है. अगर हमें I और RD की वैल्यू दी गई होती तो फिर हम एनालिसिस करके भी इंश्योर कर लेते, लेकिन इस प्रॉब्लम में उसने हमें गिवन कर दिया है कि ये MOSFET सैचुरेशन में. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस Rin एंड द वोल्टेज गेन V out over Vi. सो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशंस निकालनी इनपुट रेजिस्टेंस Rin की और वोल्टेज गेन V out over Vi की. निगलेक्ट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट. तो यहाँ पर हमें एक आसानी कर दी गई है. उसने कहा कि यार चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. सो वी कैन अज्यूम कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 और VA is equal to infinity और that means R naught is infinity. So जो भी मॉडल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें एक आसानी यहाँ पर कर दी गई है कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन के बगैर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं.
सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। एज अ प्रैक्टिस जो है आप इसको अर्ली इफेक्ट के साथ भी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो यहाँ पर आपने डीसी एनालिसिस हमें करने को कहा नहीं गया, तो वो स्टेप हम स्किप कर देंगे। स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर्स भी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि डीसी आईडी हमें पता नहीं है और वीओवी भी हमें पता नहीं है। So let's go to the third step here and draw the AC equivalent circuit and then analyze that AC equivalent circuit and make a decision whether to use pi model or T model. So AC equivalent circuit draw करने के लिए you will short circuit these capacitors. You will suppress the DC sources, तो ये DC voltage source है, इसको आप 0 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे। So ये आपके पास ग्राउंड हो गया। ये आपके पास डीसी करंट सोर्स है, इसे आपने ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। एक और डीसी वोल्टेज सोर्स है, इसको भी आपने ग्राउंड कर देना। लेकिन दिस वोल्टेज सोर्स विल नॉट मैटर बिकॉज ऑफ दिस ओपन सर्किट हियर। सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन क्लियरली और फिर हम इसकी एनालिसिस करें। सो एसी इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ करना है। एसी इक्विवेलेंट सर्किट के लिए दिस इज आर डी, वीडीडी को हमने सप्रेस कर दिया। दिस कैपेसिटर इज अ शॉर्ट, सो ये आपके पास वी आउट के साथ कनेक्ट हो गया। वी हैव एन एन चैनल मॉसफेट, इट्स गेट इज ग्राउंडेड। करंट सोर्स को ओपन से रिप्लेस कर दिया, VSS को आपने शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया। ऑल्दो VSS विल नॉट मैटर बिकॉज दिस ओपन सर्किट हैज डिसकनेक्टेड दिस शॉर्ट। सो ये आपके पास दिस इज द AC इक्विवेलेंट सर्किट। जी, तो कौन सा मॉडल इसके लिए प्रेफरेबल है? शुड वी यूज द पाई मॉडल और द T मॉडल? So T model. T model is preferable because you can see that the source terminal is not directly grounded. Instead, we have applied a signal source at the source terminal of the MOSFET. By the way, ये कौन सी configuration है? Common source है, common gate है, common drain है? So common gate. ये common gate topology है। So common gate topology का की analogy आप बना सकते हैं with the common base topology of emitter amplifier, BJT amplifiers. So यहाँ पर we will see कि gain is positive. यहाँ पर gain positive आता है, input resistance small आती है। So उसी किस्म के characteristics आते हैं जिस तरह के BJT के केस में common base amplifier के आया करते थे। So common base amplifier is again not suitable, just like common base amplifier, common gate amplifiers are not suitable for low frequency applications because of small input resistance. They are suitable for high frequency gigahertz applications जहाँ पर आपके पास already तमाम source और load impedances small होती हैं and this low impedance, low input impedance becomes sort of a benefit rather than a drawback at high frequency applications. So let's analyze this और हमें कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर determine क्या क्या determine करने को हमें कहा जा रहा है? We need to determine Rn and the voltage gain. So voltage gain अभी हम देखेंगे वो आपके पास पॉजिटिव आएगा, Rn हम देखेंगे कि वो स्मॉल आएगी। अर्ली इफेक्ट के बगैर हम सॉल्व कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट आप अर्ली इफेक्ट के साथ आप करते हैं सॉल्व, अनलेस कि आपको स्पेसिफिकली प्रॉब्लम में कहा जाए इग्नोर अर्ली इफेक्ट। सो यहाँ पर सिंस सोर्स टर्मिनल इज नॉट ग्राउंडेड, सो वी प्रेफर टू चूज द टी मॉडल एंड टी मॉडल के केस में इट्स आवर चॉइस कि हम वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स यूज़ करें या करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स यूज़ करें। दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। वो फिर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि कौन सा आप चूज़ करते हैं। बोथ आर ओके, बोथ आर फाइन। यहाँ पर हम मैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स वेरिएशन मैंने चूज़ की है, लेकिन द प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी सॉल्व यूजिंग वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स वेरिएशन एज वेल। अब आप टर्मिनल बाय टर्मिनल चलते जाएं और हर चीज़ को यहाँ पर शिफ्ट करते जाएं सो दैट यू एंड अप विद द स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट। सो ये अभी हम स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाह रहे हैं। So gate is grounded
सोर्स के ऊपर यू हैव अ प्रैक्टिकल सिग्नल सोर्स VI कनेक्टेड। ड्रेन के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके पास रजिस्टर RD है और ड्रेन टर्मिनल के ऊपर हमने V out डिफाइन की हुई है। So this is the circuit that we have, and we need to analyze this circuit and determine the gain AV and the input resistance Rin. So let's start with the input resistance. So input resistance को निकालने के लिए ये करंट In है and Rin is equal to Vi divided by this In. So one can notice that In and I are the currents of the same branch but in opposite direction. So In must be equal to minus I. And यहाँ पर देखिए अगर आप ohms law लगाएं तो you can notice that कि this I is equal to 0 minus Vi whole divided by 1 over Gm or minus Gm Vi. So let's make the substitution here. In is equal to minus I. So that means and I is equal to minus Gm Vi. So In must be equal to Gm Vi. So In divided by Vi is equal to 1 over Gm, which is equal to 1 over Rin, which implies Rin is equal to sorry मैं गलत कर गया हूँ। Rin is equal to 1 over Gm. So 1 over Gm will typically be few ohms or few tens of ohms. So Rin is small. So it's a disadvantage at low frequencies, but it becomes sort of a desirable property at high frequency applications. So Rin हमने निकाल लिया. So the next is हमने gain निकालना है. So gain को निकालने के लिए let's now determine the gain here. So अब हम gain निकाल लेते हैं. Gain AV is V out over Vi. यहाँ पर इस सर्किट में RL हमें नहीं कनेक्ट किया हुआ तो समझ लें कि AV is AV नॉट, यहाँ पर कह लें कि दिस इज AV नॉट जो अब हम निकालना चाह रहे हैं. सो V out over Vi हमने निकालना है. So V out over Vi निकालने के लिए we can just apply KCL at this node. So one can notice that KCL at drain implies that there are two currents exiting the node. So I plus V out over RD are the two currents exiting the node. There is no current entering the node. So the right hand side must be equal to 0. So V out over RD is equal to minus I, or V out is minus I times RD. But I is वो हम already निकाला है हमने, because I is equal to minus Gm Vi. So V out must be equal to Gm Vi times RD, or V out over Vi is equal to Gm RD. तो आप देख सकते हैं कि gain here is positive. So this is a characteristic of common base amplifier. The gain is positive for a common base amplifier. So V out over Vi is Gm times RD. So common base amplifiers का एक characteristic है कि उस केस में gain आपको positive मिलता है. Common source के केस में gain आपको negative मिलता है. Common base के केस में आपको input resistance small मिलती है. Common source के केस में आपको input resistance large मिलती है. So ये हमें इस प्रॉब्लम में कहा गया था. So using T model we have analyzed this problem and determined the gain V out over Vi and the input resistance Rin. तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल ली हैं. So this was example 511. So just like जिस तरह BJTs में आपके पास तीन basic amplifier configurations possible थी, because BJT was a three-terminal device. MOSFET again is a three-terminal device. Once you have connected the source terminal with the body terminal, MOSFET is also a three-terminal device.
So इस केस में भी the three terminals are source, gate and drain. So again there are three basic configurations possible for a MOSFET as well. When you are talking about amplifiers, there are three basic MOSFET configurations possible. We can have common source amplifier. So common source is the first topology possible for a MOSFET. Common source means when you look at the AC equivalent circuit, you find out that the source terminal is directly grounded. So source is the common terminal, source is the grounded terminal. So that is called the common source amplifier. Then you can have common gate amplifier. So common gate amplifier का मतलब ये है कि gate terminal is grounded. So इस केस में gate terminal grounded है when you look at AC equivalent circuit. Common drain amplifier is also possible. Common drain amplifier का मतलब ये है कि drain terminal is grounded. When you're looking at the AC equivalent circuit, you find out that the drain terminal is directly grounded. So common drain is also called source follower. And again, just like जो applications common collector की थी, वो यहाँ पर common drain amplifier की है. So common drain amplifier की main application is as a voltage buffer. Voltage buffer के केस में आप recall करें, main application is as a voltage buffer. So for a voltage buffer, the three main properties are Rn should be very large, ideally approaching to infinity, AV0 must approach to 1, and capital R naught, the output resistance of the amplifier, must be very small, approaching to 0. So by analyzing the common drain amplifier, one can notice that these three properties are being met, and one can conclude that the common drain amplifier is actually a voltage buffer. कॉमन गेट एम्पलीफायर की जैसे पहले हमने बात की है, द मेन एप्लीकेशन इज एट हाई फ्रिक्वेंसीज. सो हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर दिस स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस becomes a desirable property rather than being a disadvantage. So at low frequencies it's a disadvantage, however at high frequencies it is desirable. So common gate amplifier की main application is at high frequencies. Common source amplifier की main application is as a gain stage at low frequencies. So common source amplifier main gain stage आपको use करते हैं for all low frequency applications. For example, अगर आपने audio amplifier बनाना है तो common source is a good choice जहाँ पर भी आपको gain required है. Common source की एक variation भी possible है जिसको हम कहते हैं common source amplifier with a resistor RS. So source में strictly speaking this is not a common source amplifier, उसकी थोड़ी variation है. इस केस में source terminal is not directly grounded, but source terminal is grounded through a resistor RS as far as the AC equivalent circuit is concerned. So MOSFET के केस में just like we are going on the same lines as the BJTs. So BJTs के केस में आपको चार possibilities थी. आपके पास भी common emitter amplifier हो सकता है, common emitter with RE हो सकता है, common base हो सकता है, common collector हो सकता है. So in a similar fashion, MOSFET के केस में भी you can have common source amplifier, common source with RS, common gate amplifier and common drain amplifier. So similar lines पे जो applications common source की हैं वही common emitter की थी, जो application common gate की हैं वही आपके पास common base की हुआ करती थी, जो applications यहाँ पर common drain की हैं वो आपके पास common collector की हुआ करती थी. तो sort of एक similarity यहाँ पर sort of यहाँ similar type के applications do exist between between BJT amplifiers and MOSFET amplifiers. So your basic configurations can readily be achieved. You just have to connect one of the MOSFET terminals to ground and as a consequence create a two-port network. एक पोर्ट को आप as an input use कर लेंगे और एक दूसरी पोर्ट को आप as an output use कर लेंगे. So the three basic configurations possible are as shown in this figure. यहाँ पर आप नोट करें हमने यहाँ पर biasing नहीं शो की हुई. So these are AC equivalent circuits. We need to bias the MOSFET for amplifier application जो कि हमने पहले भी establish की है कि MOSFET has to be biased in saturation अगर आप उससे amplifier बनाना चाह रहे हैं. So these are AC equivalent circuits and looking at these AC equivalent circuits, common source के केस में source terminal is directly grounded. You apply the input at the gate terminal
and take the output at the drain terminal. कॉमन गेट के केस में, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल भी देखी है, कॉमन सोर्स की भी एक एग्जांपल पीछे हमने देखी है। कॉमन गेट के केस में गेट टर्मिनल इज डायरेक्टली ग्राउंडेड in AC equivalent circuit. You apply the input at the source terminal, you take the output at the drain terminal. Common drain के केस में you apply the input at the gate terminal. गेट के ऊपर आपने इनपुट अप्लाई किए, ड्रेन टर्मिनल इज ग्राउंडेड. अगेन AC equivalent circuit की हम बात कर रहे हैं, ड्रेन टर्मिनल इज ग्राउंडेड. As far as the AC equivalent circuit is concerned, input is applied at the gate terminal, you take the output at the source terminal. So common drain के केस में आउटपुट आप सोर्स टर्मिनल के ऊपर लेकर चलते हैं. एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर जो ये कॉमन ड्रेन में आपने लिखा था कि वोल्टेज बफर होता है, सर ये काइंडली एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे वोल्टेज बफर का क्या मतलब है? जी, वोल्टेज बफर जिस तरह हमने पहले बीजेटीज में भी स्टडी किया था, वोल्टेज बफर का मतलब ये है कि फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई से करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर एन शुड बी वेरी लार्ज, ideally approaching to infinity. The gain AV naught should be approaching to 1, and the third property is capital R naught should be approaching to 0. So इस किस्म के सर्किट को we call it a voltage buffer. So मेन एप्लीकेशन उसकी ये है कि जो आपका इनपुट सोर्स है, जो भी गिवन सोर्स है, उस पर लोडिंग का इफेक्ट मिनिमल हो. और voltage buffer will be utilized in applications where gain is not desirable, AV naught is approaching to 1. जस्ट आप लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं. सो 3 प्रॉपर्टीज जो सर्किट सेटिस्फाई करेगा कि आर एन इज़ वेरी लार्ज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, AV naught is approaching to 1, and R naught is approaching to 0 is called a voltage buffer. और BJT एम्पलीफायर्स के केस में हमने ये स्टडी किया था कि फॉर अ BJT एम्पलीफायर कॉमन कलेक्टर टोपोलॉजी एक्ट्स एज अ वोल्टेज बफर. हमने उसकी एनालिसिस की थी और हमने देखा था कि Rn is approaching to infinity, AV naught is approaching to 1, and capital R naught is approaching to 0 for a BJT amplifier in common collector topology. So similarly हम यहाँ पर भी common drain amplifier की एनालिसिस करके देख सकते हैं, and we will find out that these 3 properties will be satisfied. Rn will be very large, AV naught will be approaching to 1, and capital R naught will be approaching to 0 for common drain amplifier topology. So common drain amplifier की main application is as a voltage buffer, और उसका मेन गोल ये है कि वो इनपुट पे लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करे. तो इनपुट सोर्स से वो मिनिमम करंट ड्रॉ करें और लोड को ड्राइव कर सके. सो दैट इज मेनली जो तो ये 3 प्रॉपर्टीज को जो सर्किट सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड अ वोल्टेज बफर. जी ठीक है. यस सर. सो एम्पलीफायर्स को कैरेक्टराइज करने के लिए ऑलरेडी हम ये टॉपिक स्टडी कर चुके हैं. लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन. सो एम्पलीफायर को स्टडी करने के लिए आपके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हम एम्पलीफायर के पैरामीटर्स निकालते हैं, उनमें आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस है. और इनपुट रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने का तरीका ये है कि यू आइडेंटिफाई द इनपुट पोर्ट ऑफ द एम्पलीफायर, अप्लाई अ टेस्ट सोर्स देयर एंड डिटरमाइन द करंट ड्रॉन बाय द टेस्ट सोर्स. सो यूजुअली हम इनपुट पोर्ट पे ऑलरेडी एक वोल्टेज को डिफाइन VI किया होता है. सो Rin इज VI डिवाइडेड बाय In. सो दिस इज योर इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट. उसके बाद हम 3 तरह के गेन्स डिफाइन करते हैं. वी हैव AV which is equal to V out over VI. RL is part of the circuit, the load is connected in the circuit, so AV is V out over VI. We define AV naught as V out over VI when RL is replaced by an open circuit. तो RL को अगर आप infinity substitute कर लें और फिर आप gain निकालें तो उसको हम AV naught कहते हैं. We also define an overall gain GV which is V out over V signal. Recall करें कि सिग्नल सोर्स को हम शो करते हैं by this Thevenin equivalent, V signal, R signal. So कोई भी सिग्नल सोर्स है, it may be a microphone, it may be some function generator, it may be a preceding amplifier stage.
उसको आप इस थेवेनिन इक्विवेलेंट से लिख सकते हैं. So GV is the overall gain V out over V signal, and we can write it as VI over V signal times V out over VI, or VI over V signal. हर एम्पलीफायर के लिए you can draw this sub circuit, V signal, R signal, R in, which is the input resistance of the amplifier, and Vi over V signal by voltage divider can be written as Rin divided by Rin plus R signal, and V out over Vi is AV. So GV is Rin divided by Rin plus R signal times AV. उसके अलावा हम कैपिटल आर नॉट डिफाइन करते हैं. तो कैपिटल आर नॉट को निकालने का तरीका ये है, द फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव आर एल and instead of RL apply a test source Vx. So R naught is Vx divided by Ix, and also you suppress Vi. Vi को आप ज़ीरो भी कर देते हैं. Remove RL, apply a test source Vx, and determine the ratio Vx over Ix while suppressing Vi. So Vi को ज़ीरो सेट करना भी यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है. And finally we have capital R out, which is again Vx over Ix, but you suppress V signal here. So again R out को निकालने के लिए भी you remove RL, you apply a test source Vx instead of RL, but you suppress V signal. तो यहाँ पर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में इंक्लूड करते हैं, इनपुट सिग्नल सोर्स का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में इंक्लूड करते हैं और उसमें V सिग्नल को आप सप्रेस करते हैं. तो ये की पैरामीटर्स हैं या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर एन एम्पलीफायर, जो कि ऑलरेडी हम यूज़ करते रहे हैं बीजेटी एम्पलीफायर्स के लिए भी, और यहाँ पर भी वही सेम डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे. अगर आप मॉसफेट से भी एम्पलीफायर बना रहे हैं तो वो अगर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, कॉमन गेट एम्पलीफायर है, कॉमन सोर्स विद RS है या कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, तो वी वुड लाइक टू डिटरमिन दीज पैरामीटर्स एंड सी हाउ दीज पैरामीटर्स कंपेयर, सो दैट वी नो के किन एप्लीकेशंस में कौन सा एम्पलीफायर मोर सूटेबल है. कि अभी हमने जिस तरह देखा है कॉमन सोर्स के केस में गेन इज़ नेगेटिव, कॉमन गेट के केस में गेन इज़ पॉजिटिव, कॉमन सोर्स के केस में इनपुट रेजिस्टेंस इज़ लार्ज, कॉमन बेस के केस में इनपुट रेजिस्टेंस इज़ स्मॉल. तो इस तरह के कुछ की करेक्टर है. एंड सिमिलरली कॉमन ड्रेन के केस में हमने कहा कि इट कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ वोल्टेज बफर. सो based on these parameters one can identify which amplifier topology is suitable for what sort of applications. So वो decide किया जा सकता है once we have determined these characteristics for a given amplifier circuit. So आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करेंगे. नेक्स्ट टाइम हम कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स इनमें से इन एम्पलीफायर्स के एनालिसिस करेंगे एंड वी विल डिटरमिन these different parameters, Rin, gains, and the output resistances for those amplifiers.